नमस्ते बच्चों। टुडेज मैटर ऑफ डिस्कशन इज संधि। संधि मीन्स joining. The joining between two adjacent letters is called sandhi. It has another name in Sanskrit, that is संहिता. संग उपसर्ग धा धातु तप प्रत्यय स्त्रीलिंग संहिता. संहिते पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते. एकपदीकरण में धातु और उपसर्ग के योग में समास में ये संहिता अनिवार्य है, जो करना आवश्यक है, तथा सामान्य वाक्य में वह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है. संहिता मीन्स परसन्निकर्षः संहिता. परसन्निकर्षः, द अट्रैक्शन टू द नेक्स्ट लेटर is called परसन्निकर्षः. That means a few changes that take place by the joining of two adjacent letters is called संहिता. That means sandhi. So this sandhi has been divided into three parts. First, swara sandhi, vyanjana sandhi and visarga sandhi. Swara sandhi, the joining between two vowels. Vyanjana sandhi, between two letters one must be a consonant and another letter that may either be a consonant or a vowel. Visarga sandhi, the sandhi takes place after a visarg. That means between the two letters the first letter must be visarg and second letter that may either be a vowel or a consonant. Then swara sandhi has been divided into five parts. First, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि. दीर्घ संधि is the first category of swara sandhi that has been briefly discussed by Jha sir in the previous clip. So today we shall have to discuss about guna sandhi. The second category of swara sandhi is guna sandhi. Guna sandhi has a certain rule that is like this. First one is between a or a and e or e, ह्रस्व or दीर्घ. So after one of a or a, any of a and a, if there is either ह्रस्व or दीर्घ, the joining will be as a result a. And the second one is if ह्रस्व or दीर्घ, any of these two letters ह्रस्व or दीर्घ fall after any of a or a, then the result will be as o. These two letters a and o are called guna varna. That is why they are called guna sandhi. अत एंग च गुण संज्ञौ स्तः. ए और ओ, इन दो वर्णों को पाणिनि ने अपने व्याकरण में गुण की संज्ञा दी है. अतः अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ के आने से दोनों वर्णों के मेल में जो वर्ण आता है वो ए, और अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ के होने से जो वर्ण आता है वह ओ है. ए तथा ओ, इन दोनों के गुणवर्ण होने के कारण इस संधि को गुण संधि कहा गया है.
तो इसके कुछ उदाहरण जैसे गण प्लस ईशः गणेशः, अर्थात गण शब्द का अंतिम स्वर अ है और अगले शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ ई है। अ तथा दीर्घ ई के योग में ए होता है, अतः गण जोड़ ईश गणेश, ये गुण संधि का उदाहरण है। महा जोड़ ईश्वर महेश्वर, महा शब्द का अंतिम स्वर आ तथा ईश्वर शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ ई है। अ अथवा आ के बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के होने से ए होता है, अतः महा जोड़ेश्वर महेश्वर। अगला उदाहरण देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, देव शब्द का अंतिम स्वर है अ तथा इंद्र का प्रथम स्वर है ई। अ तथा ई इन दोनों के सन्निकट होने के कारण संधि इन दोनों वर्णों के बीच होता है। अ तथा ई इन दोनों वर्णों के बीच होने वाले संधि से ए आता है, अतः देव तथा इंद्र इन दोनों शब्दों के मेल में बनने वाला शब्द देवेंद्र होता है। सिमिलरली चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, द लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड चंद्र इज अ and the first letter of the next word udaya is u, and a plus u they both combinedly form a third letter that is o. That's why chandra plus udayah chandrodayah. Similarly maha plus utsavah mahotsavah, the last vowel of the first word that is maha is a and the first vowel of the next word that is utsava is u. A plus u is equal to o. These are the rules of gunasandhi. If after a ya or a there is any of hraswau and dirghau, the result will be as o, and this is why maha utsavah a and u they combinedly form the third letter that is o, and these two words together get as one word that is mahotsavah. Ganga jod udakam gangodakam, exactly the last vowel of ganga is a and the first vowel of udakam is u. A and u they together form the third letter that is o, and this is how ganga plus udakam become as gangodakam. So these are the few examples of gunasandhi. They are very simple, and the words those we find after joining a few pairs of words are like Ganesha, Maheshwara, Devendra, Chandrodaya, Mahotsavah, Gangodakam. They are very simple, very common words that fall in our daily behavior, in our daily use. We often use these such words, and examples have no limit. Many examples may be there, and you are advised to try some other examples. Collect a few pairs of words from any book or from your mind and join them as the examples of Gunasandhi. Work out. Stay safe. Thank you. This much is for today's discussion.
Some questions will be given just after this discussion. They will follow this clip, and you are advised to work out them. A few examples of Guna Sandhi, what you have to solve. Thank you.